Hello students, welcome all of you once again. Okay, now our chapter 4 is continuing. So chapter 4, materials, metals and non-metals. So now we are going to discuss the chemical properties of metals and non-metals. We already discussed about the reaction with oxygen, reaction of metals and non-metals with oxygen. We already discussed about it, and now in this session we are going to discuss reaction with water, metals and non-metals, metals and non-metals. So reactions with metals and non-metals. So look at this activity, and after activity we will discuss. So look this, sodium reacts with water. Sodium is an alkali metal, symbol is Na, atomic number 11. Okay, when you mix sodium and water you get a highly reactive exothermic reaction. See this, it is water and this is sodium metal. See the reaction between water and sodium metal. It reacts vigorously and it catches fire when we put in water. So we have to store the sodium metal in kerosene oil. We cannot keep it ओपन, हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते, हमको इसको केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आग पकड़ लेगी. ओके, ओके. नाउ सो इन दिस एक्टिविटी you observe that sodium metal react vigorously with water. Sodium metal reacts vigorously with water. So sodium metal is very reactive metal. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. Means when sodium metal is reacts with water, a lot of heat is generated and it is catches fire. In video you also seen that sodium metal when reacts with water, it catches fire. So therefore it is stored in the kerosene. So it is therefore sodium metal is stored in kerosene oil. So sodium metal is stored in kerosene oil. Means if you keep sodium metal exposure to air or water, when sodium metal in contact with water or air, it readily catches fire and sometime explosion takes place. So you cannot openly place the sodium metal, मतलब आप इसको खुले में नहीं छोड़ सकते सोडियम मेटल्स को खुले में. सो यू हैव टू स्टोर्ड सोडियम मेटल इन केरोसिन ऑयल. आपको उसको केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखना पड़ेगी. सम अदर मेटल्स डू नॉट. सो फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लोली. सो सोडियम रिएक्ट वेरी फास्ट एंड आयरन रिएक्ट वाटर very slowly. Iron react with water very slowly. So generally non-metals do not react with water. So there is another important terms. Generally
Generally, non-metal do not react with water. मतलब नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन नहीं करेंगी. दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट नॉन मेटल very reactive in air. Some non-metals, such metals are stored in water. So those metals which are very reactive with such metals, those are very reactive, are stored in water. Means most reactive metal, reactive non-metal stored in water, okay. So such non-metals are stored in non-matter. For example, phosphorus is a non-metal. It is very reactive. Phosphorus is a non-metal. It is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. It catches fire if exposed to air. कहने का मतलब है इट कैचेस फायर, मतलब अगर आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया देन इट कैचेस फायर, आग लग जाएगी और वो हमारी खराब हो जाएगी. टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सो दैट it is stored in water. Understand? So you have seen that some metals are very reactive with water. Generally non-metals are not react with water, but some metals are very reactive in air, so they are stored in water. मतलब आपको इनको हवा में खुला नहीं छोड़ सकते जैसे कि फॉस्फोरस है. So you have to be stored this metal in water. आपको इसको पानी में रखना पड़ेगा. Okay, now reaction with acids. Reaction with acids. Reaction with acids. How metals and non-metals are react with acids. How metals and non-metals are react with acid. Metals and non-metals are react with acids. How metals and non-metals are react with acid. So for this you have to see reactions with acids. Take 4 boiling tubes and label them A, B, C, D. Put a small piece of zinc granule into tube A, iron in tube B, charcoal in tube C, and sulfur in tube D respectively. Close the mouth of the tubes with the help of a cork fitted with a thistle funnel. Add 5 milliliters of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reactions carefully. If no reaction occurs in a cold solution, warm the test tube gently. You will observe that in tubes A and B, gases are formed, while in tubes C and D, no gas is formed. We know that zinc and iron are metals, whereas charcoal and sulfur are non-metals.
Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. What will you find? You will find that gases formed in tubes A and B burn readily, but nothing happens in tubes C and D. Thus we conclude that metals react with acids to produce hydrogen gas and metal salts. In activity, so what have to do in this activity? You have to see this activity. Take samples of metals and non-metals listed in 4.5. Okay, in separate test tube and label them A, B, C, D, E and F. With the help of dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid. Okay, with the help of dropper, add dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. मीन्स आपको क्या करना है, टेक टेस्ट ट्यूब और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है. ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब वन बाय वन. ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली. इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Okay. So what happens? So you have seen with the help of an activity. Please see this, and after seeing we will discuss about it. You have seen that magnesium is a metal. So magnesium react vigorously reaction with dilute hydrochloric acid. Reaction with dilute hydrochloric acid at room temperature, मतलब इसको गर्म नहीं करा, and warm when we put this is hydrochloric acid and this is another sulfuric acid. So react vigorously, बहुत vigorously react करेगा. And evolution of gases, वहाँ से गैस भी निकलेगी. इवोल्यूशन ऑफ गैस. एल्यूमिनियम फॉइल रिएक्ट vigorously and evolution of gas. Iron filling reaction, moderate reaction मतलब इतनी तेज नहीं होगी, थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी. एन इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, उसमें से एक गैस निकलेगी. इवोल्यूशन ऑफ गैस. ओके. कॉपर नो रिएक्शन, जनरली नो रिएक्शन. चारकोल मीन्स रिएक्शन इसमें होगी, बट नॉट इवोल्यूशन ऑफ गैस, चारकोल नो रिएक्शन. सल्फर नो रिएक्शन. So you have seen that magnesium is a metal, ये रिएक्शन करता है. एन इवोल्यूशन ऑफ ए गैस. एल्यूमिनियम इज ए मेटल, रिएक्शन नहीं भी होगी. चारकोल पाउडर नो रिएक्शन. चारकोल इज ए नॉन मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल. So no reaction. So you have seen that non-metal generally do not react with acids. So you have seen that non-metal generally do not react with acid. Non-metal generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas. But metal react with acid and produce hydrogen gas.
प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है मेटल्स की। एंड व्हेन यू बर्न्स विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, मतलब हाइड्रोजन गैस जो निकली है उसके पास में जब आप मैच स्टिक लाओगे जलती हुई या कोई भी चीज़ उसको जलाओगे तो बर्न्स विद ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस burns with a pop sound। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, मतलब वहाँ पर आपको एक आवाज़ आएगी, पॉप साउंड सुनाई देगा जब उस हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी उसको आप बर्न करोगे। सो देयर इज ए पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर does not react with a dilute hydrochloric acid। Copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating। मतलब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर डज नॉट रिएक्ट में कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, आप इसको चाहे गर्म भी कर लो। बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बट ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। सो यू हैव सीन दैट रिएक्शन विथ एसिड, तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जलाने पर एक पॉप साउंड सुनाई देगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर नो रिएक्शन इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बट इट रिएक्ट्स विथ sulfuric acid। So now last, reaction with bases। So what happen? So pop sound indicate the presence of hydrogen jet। What does the pop sound indicate? The pop sound, जो pop sound सुनाई देगा, pop sound indicate the presence of hydrogen gas। The pop sound indicate the presence of hydrogen gas। Metal reacts with sodium hydroxide to produce hydrogen gas। So generally metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas। Reaction of non-metal with bases are very complex। Reaction of non-metal with bases are very complex। So reaction of bases are very complex, मतलब बहुत ही इनको समझना आसान नहीं है बेस के साथ में नॉन मेटल की रिएक्शन। So this is the only one reaction। Metal react with sodium hydroxide। Sodium hydroxide is a base। Okay, so now we